सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, जिना तेरे पैगाम में जादू था निराला। Our leader has vision, conviction that dream can be achieved. He inspired the power and energy. Get it done. The president and your audience. Assalamu alaikum. Today I am with you to share my view on topic of Quaid-e-Azam. Mr. President, it is to be said that great people are born after centuries that change the condition with struggles and hard work. When Allah feel pity for our nation, then He send such people come out of difficulties. And of course, Quaid-e-Azam of one of them. Quaid-e-Azam Muhammad al-Jinnah is a great leader of subcontinent. He is a man of strong moral character. Quaid-e-Azam, his leadership and way of determination are the best examples for us. To follow the father of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is said, my message all hope, courage and confidence. He is known as Baba-e-Qaum, means the father of a nation. हर मुसलमान के दिल में एक आग मौजन, हर मुसलमान के दिल में एक आग मौजन, उस आग का धुआं है मोहम्मद अली जिन्नाह. Now it is our duty as true Pakistani, we follow his footsteps and teaching. The great motto of Quaid is faith, unity and discipline. तू ही शमा कारवां, तू ही मंजिल की फला, तू ही शमा कारवां, तू ही मंजिल की फला, जिंदा पाइंदाबाद है मोहम्मद अली जिन्नाह. Mr. President, after Quaid, we forget his teaching and message. Today there is Sunni, today there is Shia, Brelvi, Devbandi, but not Pakistani. Sindhi, Balochi and Punjabi are the enemies of each other. Today there is no unity, no faith and no discipline. Quaid-e-Azam आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, Quaid-e-Azam आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी खातिर खेत जले, खलियान जले, घर बार जले, माँ के सीने चाक हुए जब कड़ियल बेटे खाक हुए, कलियों का सारा ज़ूब लुटा, पुरखों का संघा संडोल गया, दरिया की रवानी रुक सी गई, यूं खून की होली खेली गई. Quaid-e-Azam आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, Quaid-e-Azam आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान. थैंक यू.